Hello everyone. So this is the third revision class for the ABM. So this is module C. We are continuing. So in this particular session, we will cover maximum questions, right? So let's plan for like 30 plus questions in this session. Okay. So while answering, just try to answer, and if you don't it's like if you are unable to answer, then just remember the answer for the exam point of view, right? So let me show you the question first. Okay, so this is the question. Okay, so here we will go any. Okay, so here 487, the for any area of knowledge to gain the status of a profession has to fulfill the following criteria. It's like first one is any area of knowledge to gain the status of a profession has to fulfill the following criteria. So for the status of profession, what are the criteria? First one is have a corpus of knowledge, and next one is a period of learning and apprenticeship and a code of conduct. So for the professionalship, we need all the three: a corpus of knowledge and period of learning and apprenticeship, and next one is a code of conduct. So option number A is the correct answer. So we'll see the next one. Okay, so let me show the question again. So here it's written for the profession, what are the criteria, right? So these are the three options: have a corpus of knowledge, a period of learning and or apprenticeship, and next a code of conduct. So here all the three options are included. So next one is which of the following organizations have first started the process of human resource management. So कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले स्टार्ट किया था HRM in India? So that is Tata Iron and Steel Company. Option number B is the correct one. So next one is which of the following in India requires the employers to notify the वैकेंसीज. सो इन इंडिया कौन सा जो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंगली वैकेंसी को नोटिफाई करना पड़ता है? ठीक है, सो दिस इज Employees Exchange Act 1959. Remember the year. Employment Exchange Act के अकॉर्डिंगली वैकेंसी को नोटिफाई करना पड़ता है इन इंडिया. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following aims at safeguarding interest and controlling exploitation of specific groups? ठीक है, सो कौन सा जो है एक्ट जो कि सेफगार्ड करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने के लिए? सो फर्स्ट है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, interstate migrant workmen act 1979. So all three acts are aiming at the safeguarding interest of controlling exploitation of specific group. So option number A is the correct one. So remember the year as well. So we'll see the next question. Which of the following ensures attention to the neglected sections of the society like SC, ST, ex-serviceman, physically handicapped? So which act? That is state and central government level directive principles. So option number C is the correct one. So we'll see the next one. Which of the following is a system developed to enhance achievement of HRD goals? ठीक है, सो ये जो HRD गोल को अचीव करने के लिए कौन सा इंक्लूडेड है? ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, this is also included. Performance appraisal, feedback and counseling, this is also included. Potential appraisal and career planning, this is also included. And next one is organizational development, this is also included. So for achievement of HRD human resource development goals, all the four are included. So option number A is the correct one. So next देखते हैं, HRD has the following subsystems. ठीक है, सो व्हाट आर द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मेंटेनेंस, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग. ठीक है,
सो HRD हैज द फॉलोइंग, कौन सा सब सिस्टम जो कि HRD के अंदर इंक्लूडेड होता है? सो फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंक्लूड होता है. नेक्स्ट वन है डेवलपमेंटल, ये भी इंक्लूड होता है. नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड. सो 1 to 3 इज द करेक्ट वन. सो रिमेंबर. सो नेक्स्ट है dash is a technique that facilitates the listing of what is required to be performed for a task or a job. ठीक है. सो जो कि एक टास्क जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब इंक्लूड करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जॉब रोल और जॉब एनालिसिस इज ए टेक्निक दैट फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग और ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म फॉर ए टास्क. एक टास्क करने के लिए क्या क्या जरूरत है, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड, वो हमें जॉब रोल और जॉब एनालिसिस मेंशन करता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो मॉड्यूल, ये जो यूनिट कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम. सो विल हैव द केस स्टडी एंड विल हैव स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस. सो जस्ट रिमेंबर द आंसर्स. Okay. Job role or job analysis comprises dash. So these are the options. So job role or job analysis comprises job description, job evaluation and job specification. So option number D is the correct answer. Dash records each and every component of the job which an individual has to perform in a given set. So क्या है जो कि डिफाइन करता है कि एवरी कंपोनेंट जो जो रिक्वायर्ड है फॉर ए जॉब और व्हिच एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन ए गिवन सेट. ठीक है. सो एक इंडिविजुअल को एक जॉब के अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या वो एवरी कंपोनेंट को डिफाइन करता है. सो दिस इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन. सो जॉब डिस्क्रिप्शन से एक इंडिविजुअल को पता चल जाता है कि उसको उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. So we'll see the next question. The list of requirements prepared in terms of educational, professional qualification, age, work experience, specific knowledge, skills, etc. is known as, is called as. So these are the requirements. So this is known as job specification. ठीक है. सो एक जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, ये सब को हम मेंशन करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन अंडर. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. सो विल सी द नेक्स्ट. Dash is performed. Dash is primarily used to compare similar. Dash is primarily used to compare similarity between jobs within an organizations or between organizations or even in an industry. So किसको हम use करते हैं to compare the jobs? It may be inside the, it's like within the organizations or may be between some organizations or between in an industry. ठीक है. तो कौन सा वाला टर्म को हम यूज करते हैं? That is known as job evaluation. So job evaluation को हम यूज करते हैं to compare the job. ठीक है. So we'll see the next question. The training and development system in an organization involves which of the following which of the following. ठीक है. So training and development system क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट वन देखते हैं. Identification of training needs, conducting the training, evaluation of the training and next one हो जाता है selection and development of trainer. ठीक है. So all the fours are included in case of training and development system. So option number A is the correct one. According to Nadler, the learning to related job is called as, the learning to related job as per the Nadler is known as training. According to Nadler, the learning to prepare an individual for a different but identified job is called as. So the learning to prepare a individual for different or identified job, उसको हम क्या बोलते हैं? That is known as education as per the Nadler.
सो यहाँ पर क्या है, टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल, ठीक है, द लर्निंग टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पर द लर्निंग टू रिलेटेड जॉब उसको बोलता है ट्रेनिंग, द लर्निंग टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल टू बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब और टू बी फॉर ए डिफरेंट जॉब और कैन बी सिमिलर जॉब, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू नल्डा द लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ये है कीवर्ड ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, रिमेंबर दिस, not related to a specific present or future job is known as, so this is known as development. Growth of the individual as per the order is known as development. So we'll see the next question. Which of the following statement is correct regarding training and development? ठीक है, so training and development के regarding कौन सा वाला जो point है which is correct? So these are the points you can see. फर्स्ट पढ़ते हैं, when the goal is to improve the performance, जहां पर हमारा गोल है परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए, the training should be evaluated to check on the improvements. So जहां पर हमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए वहां पर हमें ट्रेनिंग को इवेलुएट करना चाहिए to see to know the improvements, ठीक है, this is true. So next one is, when the goal is futuristic, one cannot evaluate the performance until the individual moves to a new job. So this is also true. When our goal is futuristic, वहां पर हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे जब तक इंडिविजुअल एक न्यू जॉब में शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट, ठीक है, इट हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट नो डायरेक्ट इंपैक्ट मे बी सीन ऑन द परफॉर्मेंस। सो जहां पर हमारा फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर, वहां पर जो है नो डायरेक्ट में बी सीन ऑन द परफॉर्मेंस, सो परफॉर्मेंस से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है, देयर इज ए चांस। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was a teacher to adults? Jesus Christ, Socrates, Plato. So all of them are was a teacher to adults. Next देखते हैं। Whose work, एक सेकंड, अरे यार, so whose work can be cited as the first instance of definition the perspective of adult learning in 20th century. So किसका जो है adult learning के लिए फर्स्ट इंस्टेंस के हिसाब से हम काउंट करेंगे, so that is Lindemann. So option number C is the correct one. So Lindemann's work can be cited as the first instance for the adult learning in case of 20th century. So we'll see the next one. So that's all for this session. So jaldi हम will bring one more session, ठीक है। So we'll try to cover more than 100 questions. So just stay tuned, revise it, and अगर आप practice कर रहे हैं then उसको 2 क्रॉस स्पीड से देखिए, ठीक है। So this is for your something like add on to your preparation. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।